मुझे याद है ट्रिनिडाद में पहला बार जब गई थी ना, लिखा था स्टार फॉर होप. When I'd first gone to Trinidad, they had this expression on a sign, stars of hope. जहाँ उम्मीद है वहाँ हिम्मत है, जहाँ हिम्मत है तो परमात्मा की मदद है. Where there's hope, there's courage, and when there's courage, there's God's help. अंदर से आवाज़ होता है उम्मीदवार को, जो कुछ होगा ये कुछ भी नहीं है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा होएगा. One who has hope always has the feeling, it'll turn out well, it'll turn out well, it'll be fine. उम्मीद को छोड़ने के, छूटने के कई कारण बनेंगे, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे. Then there might be many different reasons to cause loss of hope, but I must make sure I don't let go of hope. अच्छा अंदर से विश्वास है, जैसे देख रही थी ना, भी चलो अंधेरा है, चलो ठंडी है, भला ये अरे दिन आएगा ना, अंधेरा है तो घबराना थोड़ी, अभी अंधेरा है, सुबह को सवेरा हो जाएगा. I was seeing the slides, and of course that was the message, that even at a time of cold, dark winter, yet still there's hope that the time of the light will come, that the sun will shine, and so one must never lose hope. कुदरत के नियम अनुसार सदाई गर्मी होवे या सदाई सर्दी हो तो ही सकता है, या सदाई रोशनी रोशनी अंधेरा न हो तो ही सकता है. According to the law of nature, it's not possible. There should always be light, there should always be warmth and heat, but there'll be heat and there'll be cold, there'll be light and there'll be night, both. उम्मीद तो उसमें सदा रह सकती है जिसमें थोड़ा धीरज है. If one has patience, then one can always maintain hope. जल्दी अधीरे नहीं होता है. Never to get impatient. दूसरा शांति भी है, भगवान में विश्वास भी है. When there's peace and faith in God. इसका भगवान में विश्वास नहीं है ना, उम्मीद हार देता है, छोड़ देता है. If there isn't faith in God, then one loses hope. मैं क्या बताऊँ, आप कहेंगे शार्ट में उतर दो तो. What more should I tell you? You're probably going to say I should answer briefly. बाकी बहुत बातें हैं. There's many different things. कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है. Even if someone is dying, they can be revived and made to live again. ओ बिल्कुल, कोई कहेंगे ये तो कोई काम का नहीं, अरे बड़ा काम का हो सकता है. And somebody says, this person's useless. It's okay. No, that person can become very valuable. कोई कहेंगे इसको फेंक देना चाहिए, कोई अरे ना तो ठीक है, उसको ठीक कर देगा. Somebody will say, throw this thing away. No, it can be put right. It can be made worthwhile. उम्मीदों के आधार से तो सारा संसार चलता भी है. सब जो काम करते कुछ उम्मीद रख करके करता है. In fact, the whole world is moving ahead because of hope, because whatever action we perform, the courage with which we do it is based on hope. तो उम्मीद कोई छोड़ देता है तो जैसे सांस बंद हो जाता है, फिर हैरान हो जाते हैं. If I stop having hope, it's like I stop breathing and I choke inside. उसको भी ऑक्सीजन दे करके सांस चलाने लग पड़ते हैं. And so one is needing oxygen at that moment to live again. Okay. Thank you, Dadi. One of the areas that I sort of interested in is in the area of young people. And one of the things that that young people bring up a lot is when they actually look at the world around them, there seems to be so much chaos, tsunamis, floods, earthquakes, terrorism. How do we give a positive message of hope, especially to the youth, Daddy? With such a bleak picture around us. पहले तो नौजवान समझे, मेरे में जो अभी नौजवानी है ना, कुछ कर सकता हूँ ना, तो देखकर घबराता क्या है, ये सब हो रहा है. A young person should remember that they have the power of youth on their side. All of this is happening. Yes, that's true. That's true. जो कुछ हो रहा है उसके कारण भी समझ लिया है. But let me also understand the causes for why all this is happening. खास नौजवानों को मेरी राय देती हूँ, अपनी समझ ठीक तरह से चलावे. And so my advice to young people in particular is use your wisdom in the right way. या बुद्धि फास्ट और नेगेटिव पर ही चलाते हैं तो ताकत नहीं है बुद्धि को. If we let the intellect move quickly in a negative direction, the intellect loses power.
बुद्धि को बड़ा शुद्धि से श्रेष्ठ सोचने की आदत डाले. Let the intellect develop the practice of having elevated thoughts, positive thoughts. ये तो मुझे आपको पता है, हम सब छोटे छोटे नौजवान आए थे, तुम भी तो नौजवान आया था. You know that when we came to the Brahma Kumaris, we were very young. When you came to the Brahma Kumaris, you were very young, 30 years ago. अभी 30 साल में तुम नौजवान ने क्या किया है, अच्छा किया है ना. And so what did you do from youth up until now? It's been good things that you've तो done. अपना ही मिसाल दिखा दो सबको. So your life is an example for others. पॉजिटिव रखा है, प्योर रखा है, अच्छा संग रखा है. When you've studied well, you've had good company. तो मेरे तेरे पर ही नाज है. So I'm proud of you. सब नौजवानों को बुला करके बता दो तुमको ये करने का है. And so gather the young people together and tell them this is what they have to do. घबराना नहीं है, Not to मुझना get नहीं है. confused, not to get upset. जहाँ कोई डिफिकल्टी आती है जाकर मदद करना चाहिए. Where there's a problem, to go and give them help there in that difficulty. नौजवानों में स्नेह की शक्ति होवे, The youth today need the power of love, सच्चाई की पावर होवे, the power of truth, और सबके लिए भला सोचने की भावना होवे, and feelings of wanting benefit for वो everyone, जो चाहे सो पुण्य का कर्म अच्छा कर करके के दुखियों का दुख दूर करे. so that they're able to do good works that are able to eliminate the suffering of others. क्यों क्या न करे. Not to just simply ask the question why ये and क्यों what. हुआ क्या हुआ, बस दिमाग ये चलाते हैं, ये क्यों हुआ क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए. So often our intellect just races and we think, why did this happen? What is happening? नौजवान फट से ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना It चाहिए. shouldn't be like this, it should be like this, especially in that force of youth one says these things. उसमें कई मिसाल ऐसे होते हैं, हम भी अभी कर आप कहेंगे तुम बुढ़ी हुई, मैं बुढ़ी हुई नहीं हूँ. And perhaps you think that I'm old now, but I'm not old. सबसे बड़ी जवान हूँ. I'm the youngest of all of you. ये नहीं कहेंगे क्या क्यों हुआ क्या हुआ, अरे जो हुआ तुम तो अच्छा कर लेना, उठ के कर लेना. And I won't ask the question, why did this happen? Okay, something's happened, let me try and sort it out and put it right. हमारे बाजू में यहाँ फायर ब्रिगेड वाले हैं, बाजू में ही है सब. The next building to us is the fire brigade. बड़ा अच्छा संभल के रहते, क्या मजा ले कोई कार पार्क करे वहाँ. And they look after everything very well. You can't park your car there in front of their जब भी gates. कोई आप उनको आएगा फटाफट निकलेंगे आग बुझाने के लिए. And as soon as the call comes, off they go to extinguish the ये नहीं fire. कहेंगे क्यों आग लगी ऐसे, अरे जाकर के आग बुझाओ तो सही ना तुम. They won't stop to ask the question, why did the fire start? No, their job is to extinguish it, so off they go. तो नौजवान को क्यों क्या नहीं कहना चाहिए. So the youth shouldn't be asking questions हिम्मत why रख and करके what, अच्छी तरह but से to उठ have करके courage. कुछ कोई भी बात है एकदम वायुमंडल ठीक कर देना चाहिए. And with that courage, whatever it is, to go and sort it out and change the atmosphere and put it right. कोई तो लड़ने जाते जवान, हम लड़ाई को बंद करने वाले हैं. Sometimes when there's youth, they are more interested in fighting, but no, the task of youth is to stop the fighting in the world. Youthfulness means to have courage, हिम्मत से काम ले, बहादुरी से काम ले वे. to have bravery, to have courage and to आजकल use ऐसे that. नौजवानों की जरूरत है. And so the world needs such young people today. उसमें जीवन में कुछ नवीनता हो. Those who have something new in their own life. ऐसे फालतू टाइम गमाने वाली जीवन न हो. Not a life that's just wasting time फालतू पैसा गमाने वाली जीवन न हो. or wasting money. Daddy, can I? You mentioned the power of love, and it just caught my imagination there. And it seems a term that's used a lot, and also a much neglected term as well. How can we use the power of love? How can we practically use it to help others, rather than just we talk about it philosophically? But what's your advice for us on a practical day-to-day level? क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है, ये इनसे भी तो पूछ रहा है ना, ये भी तो सुन रहे हैं ना क्वेश्चन, आंसर इनके अंदर से शक्ल से देख रहा है. You're asking me the questions, but the audience are also hearing your question, and I'm looking at your faces to see if you have answers to these questions too. प्रेम कैसा होता है? धोखा देने वाला, धोखे में आने वाला. So real love is that which doesn't deceive and doesn't allow itself to be deceived. उसको प्रेम नहीं कहा जाता है. Because where there's deception, then there can't be real love. स्वार्थ वाला कोई प्रेम नहीं कहा जाता है. Where there's selfishness, there's no love.
झूठा मतलब का प्यार करने वाले जो है ना वो प्रेम नहीं कहा जाता है. If there's love being given for a specific तो purpose समझना in चाहिए mind, प्यार क्या that's चीज़ not होती real. है. So let me understand what is real love. इसलिए हमारे पास 3 शब्द है. अभी इंग्लिश में आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे मैं देखेंगी. तो आप सहज मैं करके बता बोलो. दूं, एक प्यार. In Hindi, there are 3 words for the same word, love. दूसरा So we'll प्रेम. see if we can find the translations प्रेम. appropriately. गोपियों का है भगवान से प्रेम. One is the love that the souls who संसारी ऐसे experience the प्यार की- relationship with God took that love from God. वो ऐसे प्यार की भिखारी नहीं है. Not seeking love from humans, but receiving God's love. वो भगवान से इतना प्यार है, प्रेम है, बस जो उस प्रेम में ऐसी मस्त है जो कभी दुख नहीं करती पर दुख को खलास कर देती. When there's that experience of God's love, it doesn't allow any sorrow to come. It removes all sorrow. भगवान से जो प्यार मिलता है ना उसमें इतनी शक्ति है, दूसरों का दुख भी दूर कर देती. The power of God's love is such that it's able to take away everyone's sorrow. तीसरी अटूट प्रीत बुद्धि निश्चय से जिसमें सदा सदा विजय भरी भरी है. Then there's another aspect of love, which is that which is connected with faith in the intellect, and that gives great strength to the soul. देहधारियों से लगाव वाला मोह वाला प्यार नहीं. The love that we have for most people, human love, has so often become attachment. दुख दूसरे को है रोवे खुद. And when I sometimes see another suffer, it causes me to cry. या थोड़ा सुख मिला तो बस उसके पीछे आशिक. Or if somebody gives me a little bit and I become crazy after them. और थोड़े सुख में आशिक हो जाए, थोड़े दुख में दुखी हो जाए, वो प्यार दुख. I don't want love that's going to cause me grief at times or is going to give me happiness only sometimes. प्यार में वो सच्चाई और सच्चाई, शांति, निस्वार्थ प्रेम. True love means love which is filled with peace, love which is able to give happiness, love which is able to empower and give strength. वो अपनी हार्ट बताती है. My heart tells me what that is. पूछो अपने दिल से. प्यार माना I love, माना हार्ट. Whenever they say I love, they show the symbol of the हार्ट का heart. शेप निकालते हैं ना. Heart shape, is it? तो हार्ट से पूछो प्यार है, सच्चा है. So let me ask my heart, do I have true love, honest love? सच्चा है तो उससे कोई रंग कम हो नहीं सकता. If there's true love, then there won't be any wrong action performed. उसका विवेक बड़ा अच्छा बताता है तुम सच्चा पर चलना. Because the conscience is very alert and guides the soul in the direction of truth. उसमें परमात्मा को साथी बन जाएगा आप ही तेरे साथ. And God then becomes the companion for this. Yeah, thank you, Dad. You talk very beautifully. मुझे नोट मिला है, शार्ट में जवाब दे रहा. I've received a note in advance that I should give brief replies. Thank you. But you talk very beautifully about the healing powers and the qualities of love. And it takes us quite nicely onto the second part of our theme of healing. And nowadays we depend so much on doctors and hospitals and on so many different therapies and therapists. You know, they often say that the new religion is therapism. But how can we take more responsibility for healing ourselves? सब जवाब ठीक मिल रहा है सबको. Is everyone satisfied with the answers that are being given? बोलो. We have hands up, those are not. संतुष्ट है ना भाई? ओके. नहीं, विनोद कहता है कि नहीं. क्योंकि मैं तो घड़ी पहनती नहीं हूँ. आप घड़ी देखते हो फिर मुझे घड़ी दिखाते हो. मैंने somebody from the audience is saying that Dadi's answers could be a bit longer, they're too brief. And I'm telling Dadi this, and she's saying, well, I never wear a watch, but all of you wear a watch. And if somebody shows me the clock, I don't like it. डायरी भी नहीं रखती हूँ. मेरी डायरी देखना मुझे बिजी हूँ मैं, पर ऐसे नहीं रखती हूँ सब. I don't keep an appointment diary and then say I'm too busy. अच्छा, सब बीमारियों का कारण है टेंशन. टेंशन. The cause of all illness is tension. बस और कुछ नहीं है. That's really the heart of इतनी it. सब बीमारियां ने कारण
टेंशन गहरा चला जाता है अंदर। So many different illnesses in the world today are caused because of जैसे इसको tension. मना It's किया penetrated deeply inside. तुम बॉक्स मत खोल, Pandora was told you mustn't open the box. पर तुम बस बड़ा अंदर से खोलूं ऐसे देखा, But अरे she खोले तो became क्या लगा पड़ा curious है। about it and wanted to open it, and of course we saw the result. तो मनुष्य क्या करते हैं, अंदर ही अंदर जो है ना, सारा दिन अंदर दुनिया दुख की भरी पड़ी, बाहर में तो है पर अंदर जो भरा पड़ा है ना, बहुत अच्छी तरह से ऐसा खोल के देखते हैं, फिर सारा अंदर से रोना ही रोना, दुख ही दुख आता है। The world outside is filled with much sorrow, but what we've done is accumulate many types of sorrow within ourselves. And what we do is keep opening this up and going into that box and looking into that accumulation of sorrow. And then, of course, all we experience is suffering and tears. पहले से अंदर ताकत नहीं है, कुछ इतनी खुशी तो है नहीं। Anyway, there's no power within, there's not so much happiness within. ओ सच्चा की खुशी जमा की नहीं है, बाकी सब देखा तो दुख ही दुख। Because we haven't accumulated the happiness that comes from truth, and so there's a lot of sorrow inside. तो मनुष्य आत्मा है ना, तो हैवान भी कोई किसी को दुखी देख नहीं सकता, हैवान को भी दुखी हम नहीं देख सकते। Even an animal can't bear to see the pain of another animal, and definitely as human beings there's empathy, and we don't like to see anyone suffer. मनुष्य आत्मा की एक नेचर है, वास्तव में किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, पर दुख देने में होशियार हो गए हैं। It's human nature that our natural state is that we can't tolerate seeing anyone suffer, and yet in today's world we can't stop without causing suffering in some way or another. पुराने ज़माने में हमारी 20वीं सदी में बहुत अच्छा देखा है, कोई किसी को दुख नहीं देंगे पर दुख हम पता ज़रूर करेंगे। Even in the 20th century, in my lifetime, I saw that when there were situations of difficulties and problems, people would reach out and help each other. हमारे ज्ञान मार्ग के सिवाय भी देखा है, बहुत अच्छी आत्माओं को देखा है, कभी भूल से भी किसको दुख नहीं देंगे, परंतु दुखी को देख करके फौरन उसको दर्द दूर करेंगे। In my lifetime, I've encountered many such human beings who don't want to see anyone suffer, and if they see there's someone suffering, they want to remove their sorrow in some way or another. एम्बुलेंस मंगाने, डॉक्टर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, वहीं दुख दूर कर देंगे, घर में ही कर देते। Sometimes it's not even necessary to call the ambulance or a doctor. There's something you can do to help another. और पड़ोस वाले को भी आकर बुला कर दे देते दुख। Maybe a neighbor can help another neighbor and give that help. तो आजकल मनुष्य एक दूसरे को सहयोग भी नहीं देते हैं ना, इसलिए दुख बहुत होता है। But today human beings seem to have lost that skill of cooperation, and so that causes a lot of grief. घर वाले ही सहयोग नहीं देते हैं। Even the people in my own home aren't giving me cooperation. पति पत्नी सहयोग नहीं देते हैं। Husband wife don't cooperate बच्चे together. माँ बाप को नहीं देते हैं। Children don't cooperate with their parents. इंग्लैंड में आकर देखा, बच्चे कोई बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, बच्चे को फुर्सत नहीं है बाप को जाकर पूछे भी। Coming to England, I saw the situation where the father is in hospital and the son doesn't have time to go visit the father. मैंने किसको कहा था, तुम्हारा बाप, तुम अरे यहाँ इंग्लैंड है, तुमको पता है फुर्सत होती है क्या जाकर। There was somebody who was sick, and I said to the son, "But have you been to visit the father?" And he said, "But this is England. We don't have इसी time." प्रकार से रूखापन जो है ना वो दुखी करता है। This dryness that's come into the soul is causing sorrow. अंदर ड्राई हो गए हैं बिल्कुल। Souls have become dry. तो उसके दुखों का कोई दवाइयाँ भले डॉक्टर देंगे, चलो, पर बेचारा बीमार 6 महीना भी पड़ा हुआ होगा। And okay, doctors can give medicine, but a person who's suffering in this condition can stay suffering and be sick for 6 months चलो and क्या nobody would करें, bother. घर में कौन संभालेगा, पड़ा है हॉस्पिटल में। Or some would say, well, rather than be at home, let them be in hospital. There's no one to care for them at home. तो उनसे कोई दुख दूर नहीं होगा। And so these things can't remove the sorrow. अब घर बिठा के प्यार से सिर्फ ये हमको बाबा ने सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने सिखाया, बच्चे कईयों ने यहाँ शरीर छोड़ा होगा। Brahma Baba taught me to care for others with love because I was a nurse,
and many must have died in my arms. किसी को कुछ मांगने की जरूरत न पड़े. Baba would teach me that serve others to such an आज extent भी that मैं they don't रात even को ask for 2 something. बजे भी उठ कर चली जाती थी, कोई मुझे याद कर रहा है, चली जाती थी. Sometimes my eyes would awaken at 2 a.m. and I'd feel that somebody needed something and I would go to help them. तो उसको सर प्यार से ऐसे ऐसे करो ना. तो यहाँ भी लंदन जब आई तो कोई हीलर हमारे पास आती थी, कहती थी तुम हीलर के बारे क्या समझती हो? मैं तो हीलर का काम बहुत अच्छा करती हूँ. मैंने कहा तुम बड़ा अच्छा करती हो, ठीक है, पर ये जो बाप हमको हीलिंग अपने को भी करने का औरों को भी करने का जो पुण्य कर्म है ना. Just a word of love can heal another. I remember a healer coming to the center in the early days and she asked, well, what sort of healing do you do? And I said to her, well, the healing you do is whatever you're doing, but the healing that God has taught me is to be able to heal the self with God's love and to be able to share that with others and help heal them too. उसमें बड़ा प्यार समाया हुआ है, भावना समाई हुई है. A healing that's filled with great love and is filled with good feelings. समझो बच्चा छोटा है, बेचारा डॉक्टर कुछ भी करे, पर माँ जब तक गोदी में बिठा करके ऐसे नहीं करेंगे ना तो बच्चे का दुख दूर नहीं होगा. No matter how much medicine a doctor may give, until the mother takes a child in her lap and just embraces the child and cares for the child, the pain doesn't go. माँ जो प्यार करके उसका दुख दूर कर सकती है और डॉक्टर नहीं कर सकता है. The doctor didn't remove the pain, but the mother's love removed the pain. और इंसान जो इंसान का अंदर से दुख समझ करके उसको उसके बदले में इतनी शांति, सर मुस्कुराए उनसे, ऐसे करे, ओम शांति करे, ऐसे भी करे ना. To have that empathy and to be able to connect with another human being and just simply smile at them or even to say Om Shanti, give them a greeting of peace. मैं बताती हूँ, रोज मेरे साथ कोई रह के देखे सुबह से रात तक मैं क्या काम करती हूँ. If you were to stay with me even for a day from morning through to night, you'd see what is the work I'm engaged in. अंदर दिल की बात पूछ लो, तुमको क्या है, कैसा बता. Just simply listen to another and hear what's in their hearts. दादी किसको बताएंगे? नहीं, मैं नहीं बताएंगी, तुम बताओ तो सही ना. Sometimes they say to me, Daddy, if I tell you, will you tell anyone? I say no. Just simply open your heart and tell me. अच्छा न बताओ, लिख करके दे दो ना मुझे को. Or okay, if you don't want to speak about it, write it and give it to me. लिख करके दिया ना, बताया ना, आधा बीमारी तो चली गई, पौनी भी चली गई है. Sometimes just simply writing about it and handing that over, maybe half the sickness or even 3/4 of the illness goes away. आजकल कोई दिल से प्रेम से किसी को टाइम नहीं देते हैं. People are unwilling to give each other time with love nowadays. मैं टाइम देती हूँ, प्यार से देती हूँ, ऐसे नहीं टाइम हो गया मेरे को ये फलाना. I'm willing to give time, I'm willing to give love. I never say it's too late, I have to rush off somewhere. खास वेस्ट में चलना भी फास्ट, बोलना भी फास्ट, सोचना भी फास्ट. Especially in the West, everyone walks very quickly, thinks very quickly, speaks very quickly. तो जो फास्ट बेचारा खुद ही कर, उनके पास कौन जाएगा. And so if a person's already fast and impatient, who's going to go to them? तो प्रेम का दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए. आओ आओ भले आओ जी, बैठो यहाँ. So keep the door of love open so that others can come and enter and sit and talk. तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो हीलिंग पावर है, स्नेह, सच्चाई. थोड़ा सा बैठो, प्रेम से कहो, अच्छा तुमको थोड़ा टाइम लगेगा करके क्यों में खड़े नहीं करते, थोड़ा सा बैठो. अच्छा नहीं बैठ सकते, अच्छा ओके पहले तो. And so healing happens when there's love, when there's truth, and you're willing to give time. And okay, wait a little while and your turn will come and I'll see you. Okay, you don't want to wait? Never mind. Okay, come first. Let me see you first. जो वरी करने वाले होते हैं वो हरी भी बहुत करते हैं. The ones who worry are the ones who hurry a lot. वो करी भी हो जाते हैं. And then their tongue becomes bitter. तो मैं करी होने तक नहीं छोड़ती हूँ. So I don't wait to that point of ऐसे anyone बोलने getting लग पड़े, bitter. हरी हरी कर, अच्छा ठीक ओके चलो पहले. Okay, be patient. Or you want to be first? That's a ये fine. पुरानी बात है. Also. किसने मेरे से पूछा था, एक टाइम में तुमको 4 काम पड़े तो तंग नहीं होती हो? Somebody asked me several years ago, what happens if there's 4 different tasks that you have to do simultaneously? एक ने कहा, दूसरे ने कहा, ये तो नहीं थकती हो क्या? Don't you get tired when people rush at you and 4 different people want 4 different things?
तो एक तरफ वो क्वेश्चन पूछ रही है, पुरानी बात है, दूसरे तो प्रैक्टिस उसने देखो 4 काम आ गए. This is many years ago, and on the one side this person was asking this question, and on the other side it was the reality of the situation at that time, 4 different tasks in front of me. आ गए. फिर अंदर से इतना थोड़ी समझो होवे. हीलर्स कुछ तो करते हैं ना, जो जल्दी किसको फ़ायदा हो जाता है. A healer means one that's able to bring benefit quickly, one who has wisdom. So धीरे से थोड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे वो तो हाथ से करते हैं, ये तो दिल से करते हैं. And I'm not talking about healing with the hands, I'm talking about the healing of the heart with the heart. वाइब्रेशन से करते हैं. With vibrations. तो क्या था, प्रैक्टिकल देखा, ये थोड़ा पीछे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है, पहले ये हो सकता है, ऐसे कर, अच्छा ये पूरा करो, फिर ये, अच्छा, पहले ये, फिर ये. And so, हो गया. With patience, with wisdom, one sees, well, what is a priority? What is it that needs urgent attention? And so one gives that attention, the other things wait a little while, and you go to the next and the next and the next, and it all works out. जो हीलर्स होते हैं ना, उसमें शांति होती है, प्रेम होता है अंदर. वो तो कोई मास्टर वगैरह में विश्वास है, हम तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं. A healer means one who has love, one who has truth, and sometimes healers believe in masters, but I believe in God. उनका भी कोई मास्टर होता है, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं. Healers very often have a master and they focus their attention on the master. तो कई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अपने हीलर के पास जाएंगे. Some don't go to doctors anymore, they go to the healers. विश्वास होता भाई, मैं गई ना, बस उसने मुझे ऐसे किया, मैं तो ठीक हो गई. And they'll say that I went to the healer, he touched my head, he touched my arms, and I became well. वो कभी भी बच्चों को भी उसके पास लेके जाएंगे. And they'll take their children along to the same healer. कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे. They won't go to hospitals. Okay. Hi, Daddy. It's very interesting your invitation to spend a day with you. It has a new concept in spiritual tourism that we could create days with Dadi Janki. It'd be quite interesting. Maybe I've created an idea there. It would take time, probably. बिताएंगे क्या करेंगे. If you have time, I'm willing to give you a day. ये अनुभव थोड़ा मसल तो पूछ लो, 4-5 दिन में ऐसे कैसे चोरी कर लिया है कई बातें. Ask Marcelo how many of the things he's learnt in the few days he's spent with me. अपने आप चोरी इधर से उधर से चोरी कर रहा, क्या करती है, कैसे करती है. He's stealing all the treasures from here and there and everywhere, just simply watching and learning. नहीं, जो गुरंगराई होता है ना, तो वो तो ऐसे चलते फिरते भी सीख लेता है. If someone wants to steal virtues, they can do that all the time, just walking and moving around. हम भी तो बाबा के साथ रही थोड़ा समय उन पर ऐसे चोरी बहुत किया है. I actually physically lived with Brahma Baba just for a short time, but I stole many virtues simply by seeing him and listening to him. मम्मा के साथ भी ऐसे रही थोड़ा समय ऊपर, अंदर से कैसे करते, सदा ही फेस ऐसा. I would see Mama's face, Baba's face, and see how their faces constantly had a stable smile, and I'd wonder, how do they do it? कभी आवाज से नहीं बात बोला होगा. They never spoke loudly. बताऊं, एक बारी मैं बहुत बीमार थी. बीमार शब्द नहीं कहते करके लोग कहते हैं, पर थी 24 दिन खाना नहीं खाया था, अंदर गया था. At one point, I don't like using the word sick, but the body wasn't well. And I hadn't been able to eat for 24 days. गरम पानी में सिर्फ हनी. And all I had was hot water with honey. बहुत अस्थमा था. I had a lot of asthma. तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा जन्नत के पास जाओ तो सही पूछने के लिए. And so Baba said to Mama, why don't you go see Janak? मम्मा बाबा मुझे पूछते कम थे, आदत न पड़ जाए तो भाई बाबा मामा मुझे पूछे तो मैं ठीक हूँ, अपना योग बल चलाए. Baba would want me to develop my own yoga power so that I wasn't even dependent on Baba and Mama. कभी मैं नहीं कहेंगी मुझे पेन बहुत है, सांस चला ना जाए, ऐसा ना हो जाए, कभी नहीं. अकेली सो जाती थी, ठीक है, कोई हर्जा नहीं है. And when I had an asthma attack, I wouldn't have fear. What's going to happen? Maybe I may die. No, I would just be alone and know that it's come and it'll go. तो मम्मा आई हमारे कमरे में, बहुत पावरफुल था, इतना प्यार किया, इतना
पता नहीं मेरा अस्थमा कहाँ चला गया. And Mama came into my room and just simply looked at me with that vision of soul consciousness and remembrance of God. And it was such a powerful vision that I don't know what happened, but my asthma disappeared. मुझे मम्मा की बॉडी दिखाई नहीं पड़ी, मैं भी बॉडीलेस हो गई. It was as if I wasn't seeing a human form, I was just seeing light. And I also felt detachment from my own body. उस घड़ी मुझे जो नहीं गुरुवार को जल पिलाते हैं वो बना कर मम्मा ने पिलाया. And Mama then gave me some sweet nectar to drink. सुबह 4 बजे बाबा आया, बच्ची के बाबा मैं ठीक हूँ. बाबा ने लाल केला खिलाया मेरे को. And the next morning Baba came to see me and asked, "How are you, child?" And I said, "Baba, I'm fine." And Baba gave me a special red banana. तुमने खाना खाएंगी? बाबा खाएंगी. And Baba said, "Will you eat today?" I said, "Yes, I will." खिला लिया. ये एक प्यार इतना अंदर से शक्ति भर देता है. It was the power of love that gave me the strength to get well. बीमारी को भगा देता है. It chased away the illness. Thank you, Daddy. I'd like to just move on to our third area of happiness. And from my perspective, there seems to be so much negative influence together with the effects of old memory and the pain from the past, as well as the anxiety for the future. How can we overcome these effects and experience happiness? In fact, Daddy, is it possible to be really happy in today's world, bearing in mind we live in a kind of vortex of influences that seems to be spinning around us and raining down on us constantly, day by day? नाम रखा है पहले होप, फिर हीलिंग, फिर पीछे हैप्पीनेस. परंतु मैं कहेंगी पहले हैप्पीनेस है ना तो होप सदा रहता है, हीलिंग पावर ऑटोमेटिक रहती है. Here we've kept these 3 words in the sequence of hope, healing and happiness. But my own feeling is that if I maintain my happiness, I'm able to have hope, and that in itself is able to bring healing. आप लोगों ने 6 के साथ होप, हीलिंग, हैप्पीनेस रखा है. हार्मनी भी रखते तो बहुत अच्छा हो जाता. You've got 3 H's, and if there was a 4th one added to the list, that would be even better, and that would be harmony. होप है तो हार्मोनी है तो हैप्पीनेस है, उसमें हीलिंग हो जाती है. With hope there's harmony, with harmony there's happiness, and that brings healing. और हार्मोनी नहीं करने आता है, हारमोनियम बजाना नहीं आता है, 5 अंगुली बराबर नहीं है पर मिल करके रहने नहीं आता है. In India they have this musical keyboard instrument called the harmonium, and so when you know how to play the keyboards you're able to create music, be in harmony. And so people today don't know how to live together in harmony. The 5 fingers are each different and highly individual, but they move together in harmony. And so even though people have different natures, to be able to live together in harmony is important. 3 बातों से हम सदापन को खुश रख सकते हैं. With 3 factors we're able to maintain happiness continually. वो मैं समझती हूँ कभी ऐसा घड़ी नहीं आती है जो मैं कहूँ मैं खुश नहीं हूँ. I don't think there's been a moment in my life when I've said I'm not happy. या मुझे खुश करने के लिए किसको मेहनत करनी पड़े. Or that somebody else has to work hard to make me happy. किसी मेहनत नहीं लेना चाहिए मुझे खुश करने के लिए. I shouldn't take effort by another to give me happiness. खुशी का मेरे पास इतना खजाना हो जो आए वो खुशी लेके जाए साथ रखे. I should have so much treasure of happiness that whoever comes is able to carry away that treasure. खुशी हमारे पास अमर अविनाशी हो. Let my happiness be eternal and imperishable. दुख तो आता है कई कारण से आता है, पर कारण आया वो चला गया, खुशी नहीं गई. There'll be lots of different factors that come in life that try to take away your happiness, but the factors will come and they'll disappear, but keep your happiness intact. खुशी पर्सनल अपनी मेरा पर्सनल खजाना है. एक तो सत्कर्म का. Happiness comes as my personal treasure when there's been righteous action. Secondly, when there's connection with God. और तीसरी का तब बीती बात याद किया तो खुशी गई, बीती को भूल जा. And the third is, if I'm willing to let go of the past, if I'm willing to let the past be the past and forget the past, that brings happiness. And so let me be able to forgive and forget. बस forgive और forget बस. That's it. Let me forgive and forget. किसी ने 1 सेकंड में forgive कर दो ना. In a second, forgive. कैसे माफ करूं?
शांत How can I करना, forgive them? No, be quiet. फर्क भूल जाना है। Forget it. It's fine. तो कोई भी बात भुलाने की शक्ति चाहिए। And so one needs power to be able to forget. अच्छी बात याद करके खुश रहने की, और भुलाए तो सही, पर उसको जैसे कुछ भूल की नहीं उसने। Don't just forget the mistake, but forget it to such an extent that you don't even remember that they've made a mistake. तो ये एक बड़ा, मैं तो सीधा ही कहती हूँ, नॉनसेंस है, जो किसको फॉरगिव नहीं करता। I actually believe it's a state of nonsense where we say we can't उसकी forgive भूल को someone. याद करता, याद दिलाता। Or if we keep remembering someone's mistake अच्छी and बात नहीं reminding है। them of that, it's not good. बिल्कुल सच्ची खुशी तब रहेंगी जो किसी की भूल को याद नहीं करो। I'll be able to maintain my own happiness if I don't remember the mistakes of others. बड़ी सूक्ष्म कर्म फिलॉसफी है, Because this is what we call karma philosophy, उसमें the संकल्प philosophy की of बड़ी action. फिलॉसफी है। And part of that is the understanding of how thoughts work and the response that we have of the thoughts we create. वृत्ति दृष्टि भी दुख देती है, दुख न लेती है। कभी दुख देवे ना, वृत्ति दृष्टि देती है। My own vision and attitude can sometimes cause me pain, but I can change it to make sure it brings वृत्ति happiness. दृष्टि में न दुख दिया न लिया। And so, neither with my thoughts nor with my attitude must I give sorrow or take भले sorrow. किसी ने कैसे भी दिया, मुझे देना नहीं है, मेरा धंधा नहीं है ये। It's not my business to give or take sorrow, no matter what someone else पर्सनल may have अपने done. अंदर से कोई प्रिंसिपल बना के रखना है। Let it be my principle that I won't कोई take अपने sorrow. प्रिंसिपल पर जो पक्के होते हैं, कभी हिलेंगे नहीं। Sometimes you find people who are so firm on their principles that they won't move from them. दुख कोई देता भी है, कोई कारण से आता भी है, उसके 3 कारण का पता है, बस ये बस सब जवाब दे देंगे। I don't mind expanding a little bit on this particular question, and there are 3 different factors that cause sorrow. समझो किसी का मेरे साथ पूर्व जन्मों का या पूरा का कोई करा हिसाब किताब है, Sometimes there's a very severe karmic account with somebody वो from मेरा the पीछा past, नहीं छोड़ता है, and that follows me. It won't let go. दुख देता ही रहेगा कारण ने काने। And so one reason or another keeps happening and they keep causing me sorrow. पर जो कुछ शांत कहता है कि मैं जो कुछ चुप तो को चाहे उसका वो भले देता रहे, पर मैं लेऊंगी ना, बढ़ जाएगा। But a yogi will say, if I take that sorrow, my pain will increase, and so I mustn't accept that sorrow. I mustn't take it on. वो पहाड़ जितना पर गिराए ना मेरे ऊपर, तो भी दुख ना होए। Even if a mountain falls on me, I mustn't allow sorrow to come. तो मेरा तो शिक्षक रक्षक भगवान है ना। God is my teacher and my protector. तो वो भले कुछ समय चलेगा ना, पर शिक्षक रक्षक तो साथ है ना। And even if the sorrow continues, I have to keep my protector and my teacher with me. शिक्षाओं पर चलना माना अपनी रक्षा करना, परीक्षक साथी है। If I follow God's teachings, God is my protector and my companion. भगवान की जो शिक्षाएं हैं ना, सदा सुखी बनाती है। God's teachings give me happiness वो हमारी रक्षा करती है। and protect me. तो एक है ये कारण। दूसरा, अब भी कुछ मैंने किस भूल की है। So one is the factor of some past karma. The second is that I've made a mistake. जो मेरे से गफलत से हुई है। I made that mistake now at the present moment. या केयरलेस नेचर से हुई है। Maybe it was my carelessness. गफलत और केयरलेस में फर्क है। एक का केयरलेस नेचर है, सही। दूसरा जानबूझ के मुझे उसके पता नहीं चला, ये मैं भूल करती हूँ। Sometimes there's a state of ignorance in which I don't even realize I'm doing something wrong and making a mistake. And then at other times it's carelessness that causes me to make mistakes. उसका सूक्ष्म दुखपन को भी होता है, फिर वो दुख का खाता बढ़ता है। And when there's a mistake that's been made, ignorance or otherwise, that increases the burden of sorrow. वो फील होता है ये दुख का खाता बढ़ता है। And I can feel that the burden of sorrow is increasing. तो ईश्वरी सुख जो ईश्वर से मिला है ना, ज्ञान से, अपने को महसूसता से, उसको ऐसे खत्म कर दूं जैसे सब आया पतन कैसे चुक्त हो गया, लंबा नहीं चला। Let me take so much happiness from God's teachings that I'm able to maintain the power of that happiness, and even if sorrow comes my way because of my own mistakes, I settle the account very quickly
with understanding, I'm able to finish that of the past so that it doesn't extend any further. इतना ज्ञान और योग मदद करता है, लंबा चलने नहीं देंगे. The power of understanding and the power of yoga enables me to settle that account quickly so that it doesn't last too long. वो खुशी और एनर्जी छीन जाए ना, वापस कैसे आएंगी? मुझे वो मेरी कीमती चीज़ है. If my happiness and energy is lost, that's my most valuable treasure. I don't want to do that. I don't want to lose it. तो एक्स्ट्रा भगवान की मदद से खत्म करना चाहिए. And so let me take extra help from God to be able to settle that account quickly. एक्स्ट्रा परिवार से प्यार जो है ना, औरों की दुआएं एक कुछ कोई तकलीफ पर औरों की जो दुआएं हैं ना वो भी खत्म कर देती है. And the power of blessings from the family also enable me to settle the account quickly. जो हमारा टाइम वैल्यूबल है. My time is valuable. हमारी खुशी में शक्ति बहुत है. And our happiness gives us great strength. एक खुशी की शक्ति अनेक प्रकार की शक्तियों से काम लेती है. When there's the power of happiness, I can use all other spiritual powers in my life. खुशी की शक्ति गई तो मैं निर्बल हो गई. If I lose my happiness, I lose my powers. तो सर्वशक्तिवान की शक्ति भी नहीं है, पर जो समझ से समेटने की समाने की वो भी शक्ति काम नहीं करती. If my power of happiness is lost, I've lost the power of God. I've also lost the ability to use powers in my life. The power to accommodate, the power to merge, the power to tolerate. बात को विस्तार में नहीं लेके जाऊँ, समेट लूँ से करने में काम नहीं करती. I'm then not able to bring back into essence. I let my mind go into expansion and lose further power. तीसरा है हमारा पर्सनल कोई केयरलेस या गफलत नहीं है, पर कोई न कोई दुख के कारण वायुमंडल कुछ ऐसा है, कुछ भी बात है, वो भी अंदर से योग पर समझ गए. अंदर दुख ले लिया, शक्ति गई तो सामना करना पड़ेगा. The third is where it's not been a mistake on my part, but there's something in the atmosphere, there's other things that are happening. But if I allow that to influence me and take away my happiness, I lose power. And so what I have to do is to understand that yes, there are things within the atmosphere, things that are happening around me, but with the power of my own yoga, my connection with God, I should be able to change that situation. उसपे सूक्ष्म ड्रामा की भावी आई है सीन चली जाएंगी, परंतु मेरे से ज़रा सा भी उसका छाया भी न पड़े, ज़रा सा इन्फेक्शन भी ना आए, ज़रा इफेक्ट ना आए, मुझे संभाल कर अपने आप को. Let me understand that, okay, it's a scene of drama that has come, but it's come and it'll go. But meanwhile, I mustn't allow it to influence me in any way. I mustn't get infected by it or affected by sorrow. तो दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत कुछ है, परंतु मुझे पॉजिटिव प्योर में शक्ति का जमा रखनी है. There's a lot of negativity in the world, but I have to make sure I keep within myself an accumulation, a stock of the power of good things, of pure things. उसमें धीरज, शांति, विश्वास मुझे पास कर लेता है, वो पास्ट हो गई. And with patience, peace and faith, I'm able to pass through that situation. मुझे कोई फीलिंग में नहीं लाया, नीचे उतारा नहीं, खुशी छीन नहीं सके. And even though the situation came, it wasn't able to take away my happiness, it wasn't able to bring me down. बहुत समय की सच्चाई की हुई कमाई समय पर काम आई, पर खलास नहीं हुई. If I've done good actions with honesty over the years, then the power of this stays with me and allows me to cross that situation without losing my happiness. इसलिए अंदर की फीलिंग्स सदा प्योर, पावरफुल, सबके भले वाली बहुत काल से होंगी ना, तो बिल्कुल मेरी खुशी की, पर्सनल खुशी की शक्ति है, खुश रहने की शक्ति है. ऐसे नहीं ऊपर की खुशी नहीं, खुश रहने की शक्ति है. वो शक्ति खुश रहने की दूसरे को भी खुशी से पार कर लेगी. If over a period of time I've practiced and I've maintained having nothing but pure feelings, powerful feelings, feelings of benefit, of benevolence for all, then I'm able to keep the power of happiness with me and nothing takes away that power. ये गारंटी है अंदर से. आईएस जाएंगी, पर मेरे को अडोल चल रहने के लिए टेस्ट आई है. Then there's a guarantee inside that
It's a test that's come and it'll go, but what I have to do is to maintain my own stability. Thank you, Daddy. Okay? नहीं? Yeah, I think so. तो Just that घबराने was- से दुख होता है ना. When I get confused, I ये lose my क्यों हुआ दुख happiness. होता है ना. When I think, why did this कैसे happen? होगा ये How दुख will it होता है ना. happen? All this causes sorrow. क्या समझा है. Daddy, actually, I was thinking, as I was formulating some questions on what she was saying, each question I thought of, she answered it. So I'm sure it was the same for yourselves. There was an area that I was looking at, that this aspect of karma, that the effect of our past and how it actually imprisons us and traps us. And you mentioned that three approaches would actually help to eradicate this. One was power of yoga. The second was the power of love, or the love that we receive from our fellows that gives us that empowerment. And thirdly was not allow it to affect us. But what advice would you give those who couldn't actually access those three areas, they couldn't meditate, or they didn't have the love support of others, or they didn't have the strength of their consciousness to reject the effects that were actually making war on them? What advice could you give? And this is more common probably in our world today. Souls that are in this state. How can we help them, and how can they help themselves? हर बात आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आधा मिनट की साइलेंस में जाएंगे, आप भी आधा मिनट साइलेंस बनेंगे, जो मिलेगा. When you ask a question, I pause because I know that even half a moment of silence will help. And as you spend that time in silence, you probably find yourself getting to the same answer. जब मैं जो आप कहते हो बरोबर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. It's true, there's so much that's happening in the world today. तो उसमें से हमको जो सुख मिल रहा है ना, वो फिर मिल रहा है मेरे को पर्सनल तो बहुत मिला है. तो हम सब में जिनको मिला वो दाता बन जाए. But I think about all the happiness that I have received and I've accumulated, and I think for many of you it must be the same. So it's important that we share that happiness with others, that we're able to bestow it, donate it, give it. थोड़ा भी मिला है तो भी दाता बन जाए. Even if I've received just a little bit of happiness, let me be able to give it. कईयों का एक अच्छा स्वभाव होता है, मिलान बांट देगा, फौरन बांट देगा. Some have this nature which is a very good one. They receive something and they want to give it away. तो दुख की बाजार गर्म है. It's a very heated marketplace of कान sorrow. कहाँ से न चाहते चलते फिरते बेचारों को दुख मिलता है. And so even without wanting anything to happen, yet somehow हम सब we चलते seem फिरते to सब be हो. influenced by sorrow from all directions. विश्व भर में जहाँ भी जो है सबको सुख देता चले. But wherever it is I go, let me be able to share happiness with others. आज मैं कोई आत्मा को कह रही थी, तुम चलते फिरते कितने को दुख सुख देती हो. Today I said to somebody, as you walk, as you move, are you able to give happiness to others? दुनिया में दुख देने वाले हैं, हम इतना तो चेंज हो जावे. Others give sorrow, but let me change to the extent that I'm able to give happiness. चलते हैं फिरते हैं कैसे मिलते हैं सुख देते रहो. As I walk, as I move, as I meet others, let me give happiness. और शांति देते रहो. Let me give peace. 4 खजाने हमारे पास है, हर एक के पास है. Each one has 4 treasures. ज्ञान है, समझ है. The treasure of understanding, of knowledge, अंदर से शांत रहने की आदत ही है. the practice of maintaining silence inside, peace inside, भगवान के लिए प्यार है, खुद के लिए प्यार है, love for God, love for the self, शक्ति भी है. and power.
अच्छा, जिसको जो चाहिए दे दो ना, And so share with another whatever they need. पता चले ना, किसको ज्ञान देंगे, चाहिए बेचारे को शांति. Maybe a person wants peace, but you try giving them understanding and knowledge, they don't want it. किसको कहेंगे तुम शांति, उसको चाहिए प्यार. Maybe somebody doesn't want peace, what they need is love. किसको चाहिए थोड़ी शक्ति. Someone else might need power. तो इतना खजाना भगवान ने दिया है जो मुझे चला रहा है. चलते फिरते कहाँ पर भी इधर उधर चलते तो है, चल नहीं भी चलते, सोए पड़े है, बेड पर सोए है, इतना तो दे सकते हो किसी को. And so wherever I am, as I walk, as I move, even if I can't walk and move, even if I'm lying on bed, I can't move from my bed, but yet still I can share these treasures with others. कुछ न करें, मुस्कुराएं तो सही. Even if I can't do anything else, at least I can smile. इतने बिजी है, ओम शांति, ऐसे ओम शांति, ऐसे. People are so busy that they don't even have time to smile at others and be peaceful, and so you tell them Om Shanti, but their faces are still screwed up, and maybe they're very busy, but maybe it's a busyness that's actually just simply the busyness of confusion inside. फालतू बात है कि टेलीफोन मोबाइल सिर पर रखा है. अरे किसी को तुम तो प्यार से हेलो ओम शांति, ठीक हो, अब ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. And there's a lot of wasteful chatter that goes on mobile telephones, but spend a few minutes with somebody, ask them if they're well and help them to get well. और दुखों का दुख दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा राम. तो ले लो दुआएं माँ बाप की, जब तुम और दुखों का बाबा दुआएं देगा, परमात्मा दुआएं देगा. There's a lovely song in India that they sing, and it says, God removes the sorrow of those who remove the sorrow of others. And so God is the parent, and He'll give you many, many blessings if you serve and take away the sorrow of others. मेरा भाई, यहाँ यूनिवर्सिटी में यही तो सिखाया जाता है. This is what we study here at this university, my brother. क्या सीख रहे हैं? So what are we studying? जो मिल रहा है वो औरों को दो, बांटो. So whatever you received, share that with others. कुछ खर्चा नहीं, कोई फी नहीं, कुछ नहीं. It won't cost anything. There are no fees. कल रात को जो वहाँ प्रोग्राम था, पटना में बहुत बैठ गए थे. मैं कितना खुश इसी होटल में, इस स्थान पर पैसे के बगैर कोई आ नहीं सकता. यहाँ बिगर पैसे खुशी मिली. Yesterday we had a program in Covent Garden, and the place was so packed that people were sitting on the floor. And of course in that area, wherever else you go, you spend a lot of money, but you don't get so much happiness. And people had come here, and without spending anything, they were receiving much happiness. लोगों को भले होटल में कितना खाना मिले, खुशी नहीं मिले, पैसा जो कितना खर्च करना पड़ता है, अब तो टोली खिला दो रहे हैं. People go and spend a lot of money in hotels and restaurants, but they won't get so much happiness. Cook something sweet, share that with another with love, and that will give a lot of happiness. उस पे भी अच्छी तरह से खुशी आ जाती है ना. That will bring you happiness too. हमारी कहते भाई दिल खुश मिठाई भी बनाने आवे तो खिलावे, दिल खुश रहने की मिठाई अंदर बनावे तो खिलावे ना. In India we have a special sweet which is called the happy heart sweet, and so let me learn how to make others happy. Let me learn to cook this sweet. सिर्फ दातापन के संस्कार चाहिए. I need to have the qualities of being a bestower, a giver. अभी सारे विश्व में देखना लाखों करोड़ों को खुशी आएंगी, दुख चला जाएगा. And it's happening. I can see a moment coming now when each one is going to be able to share happiness with others so that the sorrow of the world is removed. लाखों लोग ब्रह्मा कुमारियों के कनेक्शन से रोना तो बंद कर दिया. Certainly, I would say that hundreds of thousands of people studying the teachings here have learned how to stop crying. भाई ब्रह्मा कुमारियों को जो जानता है वो रोता है. Those who study the teachings, do they ever cry? सदा हंसते हैं. They always smile. Okay? Okay? अपने बिल्डिंग में, अपने गली में, अपने गांव में सबको बताते जाओ. In your building, in your street, in your village, in your city, share these ideas with others so that they experience them too. Thank you, Dadi. Okay.
what more can we say? I just think that we've heard so much wisdom, so much love, so much hope. I think that through Dadi's words and through her life gives us so much hope. And her vibrations and her heart opening and giving at every moment, I think is bringing so much healing to us and to the world. And the natural effect of that, of course, is happiness. So, Dadi Janki, thank you very much for spending a few moments with us. And these few moments seem like an eternity, don't they? We go beyond time and space, don't we? When we hear such wisdom and such vibrational energy, that it takes us beyond. And I think the moments that we need to treasure when we hear so much dross in the world, isn't it? We hear so much non-essential. And when we just spend so much, just a short while in this sort of the orbit of such wisdom, I think our heart is enriched. So thank you, Dadi Janki. Thank you, Sister Jayanti. And thank you very much, everybody else.